chapter, chapter number 5 it is, Nimai the friend forever. So here it is about, the chapter is about Nimai. Okay, Nimai the friend forever. Do you know who Nimai is in the chapter? Nimai is a neem tree. Okay, Nimai क्या है? एक ट्री का नाम है, नीम के पेड़ का नाम है Nimai. Okay, and this is a neem tree which is very very special to a family. जैसे आप नीम ट्री कितने सालों सालों तक जिंदा रहता है, राइट? नीम ट्री, सो इट बिकम स्पेशल टू यू, आपके लिए वो बहुत स्पेशल हो जाता है क्योंकि आपने उसको बचपन से लेके आप बड़े हो जाते हो तब तक आपने उस ट्री को देखा होता है, राइट? सो सिमिलरली this tree Nimai, neem tree, this neem tree Nimai, it has a very special place in the life of Raghav, in the family of Raghav. राघव एक बॉय है और उसकी फैमिली में नीम ट्री जो है निमाई, उसकी बहुत बहुत स्पेशल प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस पेड़ की। क्यों? क्योंकि जब से बहुत पुराना है ये पेड़, उनके फैमिली में हमेशा से रहा है। कोई भी फंक्शन होता है उनकी फैमिली में तो वो यहीं पे होता है। दैट्स व्हाई दिस ट्री इज वेरी वेरी स्पेशल टू देम। दे हैव बीन सीइंग दिस ट्री फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से वो लोग देखते आ रहे हैं। और सबसे उसके लिए स्पेशल प्लेस क्या है? उसके लिए, राघव के लिए सबसे स्पेशल प्लेस क्या है कि नीम ट्री के पास बैठना, नीम ट्री के पास बैठना और वहां पे जो सुंदर सा ब्लू स्काई दिखता है उसको वो जाके देखना। एंड इट इज ऑड राइट कि निमाई इज द नेम ऑफ अ ट्री। क्यों? क्योंकि पेड़ों के जनरली नाम नहीं होते ना, पेड़ों को हम क्या कहते हैं? नीम ट्री, अनार का पेड़, नींबू का पेड़। बट दिस इज द ओनली ट्री इन द वर्ल्ड विच हैज गिवन अ नेम, विच हैज बीन गिवन अ नेम। ओके, ये इकलौता पेड़ है जिसको नाम दिया गया है। व्हाई? बिकॉज दिस इज सो वेरी वेरी मच स्पेशल। ओके ओके, एंड जब से ये रिमाई पेड़ इनकी लाइफ में आया है, ये बहुत एक इनसेपरेबल पार्ट हो गया है इनकी लाइफ का। राघव के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने इस पेड़ को उगाया था एंड वो हमेशा ही इस पेड़ को पानी देते थे एंड ही वाज द वन हु यूज्ड टू सर्व दिस ट्री। ओके, वो जो इस ट्री को उगाना, यहाँ पे अपनी प्रेयर करना, अपनी मॉर्निंग चाय जो होती है, सुबह की चाय होती है, वो भी वहीं पीना। और गर्मियों में आफ्टरनून के अंदर जब बहुत ज्यादा धूप पड़ रही होती है, पर नीम के वहां पे बहुत छाए रहती थी। सो दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर हिम। वहां पे कुछ रीड करना होता तो भी वो वहीं बैठते थे, कुछ सोचना होता तो भी वो वहीं बैठते थे। And he used to what he used to do, he used to look at the tree, he used to look at the tree, he used to gaze at the tree. Okay, क्योंकि पेड़ को, पेड़ की पत्तियों को he used to look at that. And who was Raghav's grandfather? Raghav's grandfather was a director of a multinational company, एक कंपनी के डायरेक्टर थे। और जब वो वहां से रिटायर हो गए तो उन्होंने, उनको और इंटरेस्ट किस में आने लगा? नीम के पास बैठ के अपनी बुक्स पढ़ने में, इंडिया के कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, अलग अलग बुक्स पढ़ने में उनको और इंटरेस्ट आने लगा उनके रिटायरमेंट के बाद। दैट मीन्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही यूज्ड टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑफ टाइम इन द नियर द नीम ट्री। ओके, क्योंकि ही वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन, एंड उन्होंने ही उसको उगाया था। नीम ट्री को किसने उगाया था? राघव के ग्रैंडफादर ने उगाया था। एंड इसलिए उनको और भी इंटरेस्ट आने लगा इस पेड़ के अंदर। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। आई होप अब तक हमें जो पढ़ा है वो अभी हमको आ गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, which tree had a special place in the life of Raghav? What was the tree? Which tree had a special place? Divya, I'm unmuting you. Which tree has a special place? Nimai tree. Yes, Nimai tree, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, it had a very very special place in the life of Raghav. Okay, Raghav is the, okay, I have unmuted you again, I guess. Yeah, wait for a second, children. Yeah, next one. What could Raghav see from the window of his room? राघव को अपने विंडो से, अपने रूम की विंडो से क्या दिखता था? राघव used to see this Nimai tree. Okay, उसको, राघव को क्या दिखता था? He used to see this Nimai tree. Nimai tree की जो पेड़ है, उसकी पत्तियां हैं, he could see that from there. उसके राघव का जो फेवरेट कॉर्नर था वो पूरे घर में क्या था? This
उसके रूम की विंडो जहां से उसको ये पेड़ दिखता था। राघव को उसके रूम से ये पेड़ दिखता था विंडो से, एंड दैट वाज हिज फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस। पूरे घर में उसका फेवरेट कॉर्नर यही था। ओके, what could Raghav see from the window of his room? What could Raghav see? Raghav could see the Nimai tree from the window of his room. Why was the tree named Nimai? Okay, tree का जो नाम है वो Nimai क्यों रखा गया? Okay, who will answer this question? Iminder and Anshul, you are raising your hands. Do you know the answer for this question, or are you raising the hand for the previous question? Anshul, you are raising your hand. I'm unmuting you, okay? Okay, अब आपके hands lower हो गए हैं. Okay, so इस पेड़ को निमाई क्यों नाम दिया गया था? Who will answer this question? Anshul is raising his hand. Anshul, I'm unmuting you. The tree was named Nimai because it was a neem tree. It was a neem tree and it was in a Bengali household. जो राघव का घर है वो क्या है? Bengali household है, and that's why Bengali में नीम को निमाई बोलते हैं. That's why they named this tree as Nimai tree. Okay, good Anshul. Okay, do all the trees have a name of their own? No, all the trees don't have a name of their own. सारे पेड़ों को नाम नहीं दिया जाता है. It was only this Nimai tree which was named. ये सिर्फ यही name tree था जिसका नाम था पूरे वर्ल्ड में. और किसी ट्री को हम नाम से थोड़ा ना बुलाते हैं. It was this tree which was very special, and it was this tree which was named Nimai. Okay, next ones. How long has been Nimai has how long has been Nimai how long Nimai has been the indispensable part of Raghav's life? कितने कब से जो ये निमाई ट्री है वो राघव के लाइफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट रहा है? कितने टाइम से? Who will answer this question? Okay, Anshul is again raising his hand. I want others to answer. Kanishk is raising his hand. Kanishk, I'm unmuting you. Yeah, ये जो नीम ट्री है वो कितने टाइम से? Yeah, try. When the Raghav's grandfather retired from his work. Yeah, so when the Raghav's grandfather retired from his work, तब से तो it was an indispensable part of their life. Okay, लेकिन जब से ये नीम ट्री उगाया गया है तब से ये बहुत indispensable part रहा है. एंड जब उनके ग्रैंडफादर का रिटायरमेंट हो गया उसके बाद से तो और ज्यादा उनका इंटरेस्ट बढ़ गया उनके. लेकिन ये जो नीम ट्री है ये कितने टाइम से उनकी लाइफ में रहा है? दिस निमाय जो है कितने टाइम से रहा है उनकी लाइफ में? जब से नीम ट्री को उगाया गया है, जब से नीम ट्री बड़ा हुआ है, from that long Nimai has been the indispensable part of their life. And after the retirement of Raghav's grandfather, Nimai has acquired more importance in their lives. Okay, good Kanishk. Next one. Which member spent most of the time under the Nimai tree? It was the grandfather. Okay, it was the grandfather of Raghav who spent most of their time under the Nimai tree. Okay, question number 3. Where did Raghav's father read his books? Raghav के grandfather जो थे वो अपनी books कहाँ पढ़ते थे? निमाई के पेड़ के नीचे. निमाई के पेड़ के नीचे he used to read his books. Okay, fourth one. On what topic could Raghav's grandfather talk endlessly about? राघव के grandfather जो थे किस बारे में books पढ़ते थे और किस बारे में बहुत ज्यादा बातें करते थे? राघव के grandfather. Who will answer this question? I want the answer from you people now. Yes. Kanishka and Anshul are again raising their hands. Others, I want answer from other children as well. Okay, Divya, you answer. Others also, please raise your hands. It's an easy chapter. Please raise your hand and we are clearing your doubts. Okay, Divya, I've unmuted you. Raghav's father talked endlessly about on India's vast wealth of trees and plants. And also he used to talk endlessly about India's, come again. India's vast wealth of trees and plants. And also he was interested in reading books about India's literature, India's culture, and
इंडिया के कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, एंड India's vast wealth of trees and plants, because उनके लिए नीम ट्री की जो लाइफ की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी, एंड ही ऑल्सो न्यू कि नीम ट्री से कौन कौन सी मेडिसिन बन जाती हैं, सो ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट. ओके, गुड दिव्या. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. ओके, वेट. Yeah, what this is the next page. Yeah. Why could Raghav not think of more enchanting scene than Nimai tree? राघव के लिए सबसे ज्यादा important and बहुत ज्यादा enchanting scene क्यों होता था this Nimai tree? Yes, children, answer faster. We will complete this faster. Pehel, I'm unmuting you. Pehel, yeah. Yes, Pehel. मैम मैंने पहले वाले क्वेश्चन के लिए करा था. Okay, then lower your hand. Then lower your hand and try answering this question. Why could Raghav not think of more enchanting scene than Nimai tree? राघव के लिए बहुत अच्छा scene क्यों होता था? Tell me. Okay, any other person? Okay, Pehel, I'm muting you again. Okay, any other person? Aryan, I'm unmuting you. Yes, so this tree, ये राघव के लिए indispensable part क्यों था? Okay, some more children are joining. Because it was a source for Raghav. It was a source for Joy what? for Raghav. It was a source for joy for Raghav, and looking at the Nimai tree, it was his most favorite part. Looking at the Nimai tree from the corner of his room, from the window of his room, it was the most beautiful corner for him in the house. And looking at the Nimai tree was the source of joy for Raghav. Okay, good, Aryan. Next one. What activities were performed by the grandfather under the Nimai tree? क्या activities perform करते थे? What activities were performed? What did grandfather used to do under Nimai tree? Heminder, I'm unmuting you. What activities were performed by? मैम राघव के ग्रैंडफादर मैम उसके नीचे बुक्स रीड करना और चाय पीना और अखबार पढ़ने और अपनी morning prayers he used to do. Morning prayers, he used to drink his morning tea, वहाँ पे prayer करना, and also he used to read what? He used to read books. He used to read books under the tree. Okay, good, Heminder. Okay, next one. Why does Raghav consider the window of his room as the favorite corner of his house? Yes, faster, children. Divya, Anshul, Kanishk, Heminder, I have already answered. Devraj, you're raising your hand, but you are not visible to me. Devraj, switch on your camera. Shazib, you also. You are raising your hand, but you are not visible to me. Yeah, Devraj, I'm muting you. Ma'am, Raghav considered the window of his favorite corner because he can get the full glimpse of the Nimai tree from there. Yes, so because he could see the Nimai tree from there, and that's why it was the most beautiful corner of for him. Okay, good. Next one. I have one. Yeah, I'm unmuted you. Okay, so now what happens in their life? अब ये Nimai tree तो उनके लिए एकदम उनके लिए बहुत special है. The shade of the tree was this place where the old man had enjoyed happiness and borne sorrows. Or okay, the shade of the tree है. यहीं पे उनको बहुत खुशियां भी मिली and वहाँ पे बहुत sorrows भी मिले. Okay, some children are raising their hands. Children, when I'm asking you the next question, you raise your hands then. Now, for now, just lower your hands. Okay. ओके तो वहां पे जो ये जो पेड़ था उनके जो ग्रैंडफादर के जो पोते हुए थे, मतलब कि राघव पोते पोतियां जो भी उनके बच्चे पैदा हुए थे, वहां पे जो सबका नामकरण जो है, नामकरण मतलब क्या होता है? व्हेन यू गिव नेम टू अ बेबी. ओके, नामकरण संस्कार, नेमिंग सेरेमनीज क्या होती है? व्हेन यू गिव अ नेम टू अ बेबी, दैट इज कॉल्ड एज नामकरण संस्कार. सो
जो सब बच्चों के नामकरण संस्कार है, बर्थडे पार्टीज हैं, ये सब भी यहीं सेलिब्रेट हुए थे। तो समझ रहे हो आप, ये जो पेड़ घर में कुछ भी स्पेशल होता है तो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस नीम ट्री। And Shamal would forever remember the day when the news came that his grandma had died of heart attack and his uncle's house in Mysore. अब उनको जो grandfather थे, sorry, अब क्या हुआ, ग्रैंडमदर की डेथ हुई। ओके, ग्रैंडमदर की डेथ हुई। सो ओल्ड मैन जो मतलब जो राघव के ग्रैंडफादर है, उन्होंने एक भी वर्ड नहीं बोला एंड वापस से निमाई के पास चले गए। निमाई के अब किसकी डेथ हुई है, राघव की ग्रैंडमदर की डेथ हुई है। ओके, so now it was a moment of sorrow for the family. So now what happens, what do they decide? अब he जो grandfather थे, he came to home suddenly and जब उनकी वाइफ की डेथ हुई, जो ग्रैंडमदर है, दादी है, उनकी डेथ हुई। डेथ किससे हुई, हार्ट अटैक से हुई। ओके, अब राघव ने क्या किया, राघव की मदर ने उनके ग्रैंडफादर को बुलाया, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला बिकॉज ही वाज सो सैड। ओके, वो उन्होंने just wait, children. My voices. Yeah. So what does he do? Voice is audible to you? Children, my voice is audible to you. Okay, there have been some technical issue. My voice is audible now and the screen is also visible, right? Yeah, okay. Okay, let's start. Yeah, so अब grandmother की death हुई तो जो grandfather थे, he became very very sad and he became very sad और वो निमाई के पास और टाइम स्पेंड करने लगे। कुछ नहीं बोलते थे, वो बहुत ज्यादा शांत रहते थे, बहुत कम बोलते थे बिकॉज इट वॉज हिज वाइफ्स डेथ। ग्रैंडफादर की जो वाइफ थी, राघव की जो ग्रैंडमदर थी, शी हैड डाइड एंड द ग्रैंडफादर वाज वेरी वेरी सैड। अब जो ग्रैंडफादर, एक दिन क्या हुआ, ही वाज सिटिंग अंडर द निमाई ट्री। ओके, एंड ही वाज सिटिंग आउटसाइड, एकदम डार्क था एंड राघव की मदर ने उनको बुलाने के लिए भेजा। ओके, ग्रैंडफादर को बुला के लाओ। राघव की मदर ने बोला ग्रैंडफादर को बुला के लाओ। एट फर्स्ट राघव थॉट दैट ग्रैंडफादर वाज डोजिंग एंड ट्राइड टू वेक हिम अप। ओके, राघव को लगा कि उसके दादाजी जो हैं वो सो रहे हैं एंड ही ट्राइड टू वेक हिम अप कि दादा उठो, इट इज योर टाइम फॉर चैटिंग विद निमाई। इज अप, जो आप निमाई से बातें करते रहते हो, इट इज योर टाइम फॉर दैट। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट आंसर, ग्रैंडफादर ने आंसर नहीं दिया। सो व्हाट डिड दैट मीन, ग्रैंडफादर हैड डाइड। ओके, and the child realized that its time had come to end. Indeed, even the leaves from the tree fell on the old man's lap. So, जो grandfather थे, उनके ऊपर भी कुछ नीम की leaves गिर गई थी। So, what had happened? Grandfather had died. Grandfather died that day. Okay. So Raghav was completely lost in his thoughts, looking at thin, shiny leaves. It had always been his favorite pastime. He was a sentimental and thoughtful boy, much like his grandfather, but his materialistic father never liked this. Ab Raghav also became sad because grandfather had died, और grandfather के ऊपर जो थोड़ी-थोड़ी नीम की leaves थी, वो गिर गई थी. Okay. Okay, so let's move to, okay, we will do the oral response questions later. Okay, so now what happened? राघव की मदर ने उनको बुलाया। राघव की मदर ने बोला कि आप ग्रैंडफादर, ये तो ग्रैंडफादर की डेथ होगी, दैट्स इट। अब one day Raghav's mother comes to him and she says, we have a surprise for you, कि हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। And what was the surprise? एक नई मारुति कार हम खरीद रहे हैं, नई मारुति कार खरीद रहे हैं। तो इट वाज अ ग्रेट न्यूज, राइट? आपके घर में नई कार आने वाली है, सो दैट वाज अ ग्रेट न्यूज एंड राघव वाज वेरी वेरी एक्साइटेड कि हमारे घर में नई कार आने वाली है। एंड
जिस दिन कार आएगी उसी दिन मैं पापा के साथ ड्राइव पे जाऊंगा, राघव ने बोला। ओके, बट जैसे ही उसको पता चला, मदर ने बोला कि, उसकी मदर ने क्या बोला, कि आपके तुम्हारे पापा कह रहे हैं दैट वी हैव टू कट द निमाई डाउन, कि हमको निमाई काटना पड़ेगा क्योंकि अब नई कार आने वाली है, तो हमको नया गैराज बनाना पड़ेगा, और हम वो जो गैराज जो है वो कहाँ बनाएंगे, निमाई ट्री को कट करके उस जगह पे हम नया गैराज बनाएंगे। So now Raghav got sad. Raghav became his voice became weak. कि मम्मी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम निमाई को काट देंगे? आपको ग्रैंडफादर की थोड़ी सी भी याद नहीं आती क्या? Because Nimai had a special place in their life and Nimai had a much special place in the grandfather's life. तो आप इसको सोच भी कैसे सकते हो इसको काटने के लिए? So अब जो राघव है वो बहुत रोने लगा that how could you think of cutting the Nimai tree? Okay, children, so let's move towards the oral response questions. Yeah, first ones. Whom does Raghav's mother send to call the grandfather? राघव की मदर ने किसको भेजा बुलाने के लिए? राघव की मदर ने ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए किसको भेजा? Yes, children. Again, it's the same people are raising their hands. Anshul, Divyanjali, Hemendra, Diya. I want others to answer. Others also, you can raise your hand. Shazeb, you're raising your hand, but you are not visible to me. Shazeb, if you want to answer the question, just switch on your camera. Okay, others. Okay, Divyanjali, I'm unmuting you. Grandpa had been sitting outside even after it was dark, and Raghav's mother had sent him to call his grandfather. No, we just need the answer for the question कि राघव की मदर ने ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए किसको भेजा? So we don't need the whole sentence. We just need. Raghav's mother had sent Raghav to call his grandfather. बस that's it. उसके आगे पीछे क्या है? We don't need. We just need the answer कि किसको से भेजा? तो राघव की ग्रैंडमदर ने, सॉरी, राघव की मदर ने राघव को भेजा ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए. Okay, as simple as that. Okay, good. Next one. How did Raghav try to wake up his grandpa? राघव ने कैसे उठाने की कोशिश की ग्रैंडफादर को? Who will answer? Children, I want answer from other children as well. Otherwise, I will pick someone and I will tell you to answer if you will not raise your hand. Kushi, I'm unmuting you. At first, Raghav had thought that Grandpa was dozing and tried to wake up, but Grandpa and say that Grandpa, your time for chatting with Nimia is up, but his grandfather not wake up. Yeah, So, good. So, आपने क्या पूछा यहाँ क्वेश्चन कि हाउ डिड राघव ने कैसे उठाने की कोशिश की राघव के ग्रैंडपा को? सो राघव ने क्या किया? राघव ने अपने ग्रैंडपा को बोला कि ग्रैंडफादर उठिए, आपका निमाई से चैटिंग करने का टाइम हो गया है, सो जस्ट वेक अप. ओके, ओके, गुड. नेक्स्ट वन. Who was materialistic? Sorry, where did the leaves from the trees fall? Question number 3. Where did the leaves from the trees fall? जो leaves जो थी ट्री की वो कहाँ गिरी थी? Shazib, try to switch on your camera, please. You're raising your hand, but you are not visible. Try to switch on your camera. Shazib. And Bharat, you are also raising your hand, but you're not visible to me. Okay, Shazib. Now you have switched on your camera. What have I requested again and again? That please turn on your cameras during the whole class, okay? So don't turn off your camera again. Okay, I'm unmuting you, Shazib. The leaves of the Nimai tree fall on the old man's lap. Yeah, good. And answer me the next question also. Who was materialistic in the family of Raghav? Who was materialistic in the family of Raghav? Raghav's father. Yes, good. Okay. Okay, children. So, okay, well, let me unmute you.
Okay, children, so we will continue with the chapter in the next class. In the next class, we will continue with the chapter, or if we will not be able to continue, then what we will do, I will post the chapter. I will post the video of the chapter. Okay, or else we will continue with the chapter in the next one. Okay, do you have any doubts? Any doubts, people? Any doubts do you have? Okay, Divyanjali is saying something. I'm unmuting you, Divyanjali. Ma'am, what is the meaning of materialistic? मटीरियलिस्टिक मतलब चीजों में ज्यादा विश्वास रखना बजाय लोगों के. फॉर एग्जाम्पल आई एम मटीरियलिस्टिक, दैट मीन्स व्हाट, मुझे कपड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, कार में ज्यादा इंटरेस्ट है, बट आई डोंट केयर अबाउट द फैमिली अराउंड मी, आई डोंट केयर अबाउट माय फ्रेंड्स, पीपल. लोगों में कम इंटरेस्ट होना और चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होना. व्हेन यू आर नॉट थॉटफुल अबाउट द फैमिली, व्हेन यू आर नॉट थॉटफुल अबाउट people, and you have more interest in the things, you have more interest in the expensive things, that is called materialistic. Okay. Okay, any other doubt? Anyone else, do you have a doubt? Mitali, sorry, you are trying to enter the class now. Jab 3 minutes bach gaye hain, you are trying to enter the class now, so I'm not letting you admit. Okay, just stay out of the class. Okay, anyone else? Anshul has a doubt. Anshul, I'm unmuting you. Ma'am, bone Yes, Soros Anshul. means सौरो मतलब दुख. ऐसे। ओके, सौरो मतलब कोई भी आपको दुख हो. हाँ, फिर से मैम बोलो. हमने पेज नंबर 37 के ऑर्डर रिस्पॉन्स तो की नहीं। अच्छा, ओके, पेरेंट्स, ओ सो सॉरी, सो सॉरी. सो ये हम कल कर लेंगे. ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ओके. ओके चिल्ड्रन, दैट्स इट. एनी अदर डाउट? नो मैम. Okay, okay, children. Then, thank you so much for today's class, and we will continue with the chapter in the next class. Or else, I will post the video of this chapter on Scholars ERP, and you can check out the video there. Okay, children. Thank you so much, and we will meet in the next class. Thank you so much.